Good morning, students. Resuming our topic today, after concave mirror, after doing the image formation of concave mirror, we will today study convex mirror. Now listen, which mirror is converging? Concave mirror. A convex mirror is diverging mirror. Convex mirror is also a diverging mirror. Why? We will discuss. Now listen, how could you define convex mirror? So far, during type of a spherical mirror, you have defined convex mirror like this: a spherical mirror having outer surface reflecting and inner surface reflecting is called convex mirror. This is a spherical mirror. This spherical mirror is a convex mirror. Why this is a convex mirror? This spherical mirror is convex because its inner surface have been made rough and its outer surface is reflecting. Which is the front part of a convex mirror? Outer part. Front part है, and which is the rear part? Inner part here is the any problem? Inner part. The inner part is the rear part. Okay. Now we will define principal focus and focal length for a convex mirror. Observe. What we are defining? The principal focus and focal length of a convex mirror. Then we will understand why convex mirror is called a diverging mirror. We will also observe that a convex mirror has virtual focus. Okay, listen. Now, this is a convex mirror. Yes or no? Let M and M dash be the two end point. The M dash is the reflecting surface. M dash is representing the aperture. Let this be the pole and this line is representing principal axis. This is center of curvature. What we have to define? Principal focus and focal length. Which is the front part? This part is the front part. Consider from source of light, parallel beam of light. From source of light, beam of light parallel to principal axis are incidenting at the convex mirror. ये सभी पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट से मिरर को स्ट्राइक कर रहा है और ये सभी रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के. ओके, कंसीडर करो ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव. दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज पोल, दिस लाइन रिप्रेजेंटिंग प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ दीज रे ऑफ लाइट वर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दे वर कन्वर्जिंग एट फोकस. यस और नॉट? Concave mirror is converging mirror. Now we are studying convex mirror. Now since these ray of light are parallel to principal axis, after reflection from their respective point of incidence, they will diverge. ये सभी दूर जाएगा. रिफ्लेक्शन के बाद ये सभी रे ऑफ लाइट दूर जाएगा. लेकिन किस तरह? ध्यान से सुनो. मिरर के बिहाइंड द मिरर के पीछे प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है. प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है. ये सभी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये सभी रे ऑफ लाइट डाइवर्ज तो करेगा लेकिन प्रतीत होगा ये इसी पॉइंट से आ रहा. हम फिर से बता रहे हैं, पहले इस बात को समझो. इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस. क्या होता फोकस? कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो सभी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो सभी डाइवर्ज होगा. और डाइवर्ज क्या? रैंडम में नहीं, वो इस तरह प्रतीत हो रहा कि मिरर के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से वो आता हुआ प्रतीत हो रहा और उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस. हाउ कुड यू डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर? एनी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इन कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर डाइवर्जेज एंड दे अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट behind the mirror from principal axis. They appears to coming from a point on principal axis behind the mirror, and that point is called principal focus, and the distance between pole and focus is called focal length. समझ में आई ये बात? ध्यान से देखो. ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये पोल है, ये सभी ये रे ऑफ लाइट पैरेलल है, ये भी रे ऑफ लाइट पैरेलल है. रिफ्लेक्शन का ये दूर जाएगा, लेकिन किस तरह? मिरर के बिहाइंड द मिरर प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है, ये सभी रे ऑफ लाइट इसी पॉइंट से डाइवर्ज करता हुआ प्रतीत होता है और इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस. हाउ कुड यू डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर? How could you define principal focus of a convex mirror? All those ray of light which are parallel to principal axis in convex mirror after reflection from the mirror diverges and they appears to coming from a point on principal axis behind the mirror, and that point is called principal focus, and the distance between pole and focus is called focal length. है ना? Why convex mirror is diverging? क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद रे ऑफ लाइट किसी पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं हो रहा, वो अपीयर हो रहा दूर जाता हुआ एक पॉइंट से.
जो वो पॉइंट कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस से मिरर के अंदर, उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, फोकस. What you have conclude? Now you can define principal focus of a convex mirror. How could you define principal focus of a convex mirror? All those rays of light which are parallel to principal axis and convex mirror after reflection from the mirror diverges and they appears to coming from a point behind the mirror, and that point is called principal focus, and the distance between pole and focus is called focal length. Why convex mirror diverging? The convex mirror is diverging because ray of light parallel to principal axis diverges after reflection from the mirror, है ना. Now listen, a convex mirror is virtual focus. Why convex mirror virtual focus? Why the principal focus of convex mirror is virtual? In case of concave mirror, all those rays of light which are parallel to principal axis actually converge at a focus. A concave mirror has real focus. But in case of convex mirror, all those rays of light which are parallel to principal axis does not actually converge, but they appears to diverge. They appears to diverge from a point behind the mirror. यहाँ पे फोकस पे क्या ओरिजिनल लाइट रे आ रहा नहीं, वो एपियर हो रहा है, यहाँ से ये दूर जाता हुआ प्रतीत हो रहा. इस फोकस को हम कौन सा फोकस बोलेंगे, वर्चुअल. कॉन्वेक्स मिरर का फोकस हमेशा वर्चुअल होगा. इस तरह भी समझ सकते हैं, कॉन्केव मिरर का फोकस उसके सामने लाई करता है, उसका फोकस रियल है. कॉन्वेक्स मिरर का फोकस उसके बिहाइंड द मिरर लाई करता है, उस फोकस को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल फोकस. और लास्टली साइन कन्वेंशन के टर्म में अगर देखें तो हमेशा फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होगा, और कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज हैव पॉजिटिव फोकल लेंथ. वी विल डिस्कस इन द साइन कन्वेंशन. व्हाट यू हैव कंक्लूड सो फार. नाउ यू कैन डिफाइन प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर. हाउ टू डिफाइन प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर. यस, all those rays of light which are parallel to principal axis and convex mirror after reflection from the mirror diverges and they appears to coming from a point on principal axis behind the mirror. That point is called principal focus. The distance between pole and focus is called focal length. Convex mirror is diverging mirror. Convex mirror have virtual focus and the focal length of convex mirror is positive. Now we will go through the rules of image formation in convex mirror. The rules are identical in case of as in the case of concave mirror, but there is slight change we will discuss. Observe carefully. Rule 1. What is the rule 1 of image formation in concave mirror? All those rays of light parallel to principal axis in concave mirror after reflection from the mirror passes through focus. Now listen, what is the change? This is a convex mirror. This line represents principal axis. This is pole. This is focus. This is center curvature. Now rule 1. A ray of light parallel to principal axis in convex mirror. Now from source of light, a ray of light is incidenting at the convex mirror which is parallel to principal axis. ये ray of light parallel है principal axis के. रिफ्लेक्शन के बाद ये दूर जाएगा और ये वर्चुअली प्रतीत होगा ये फोकस से आ रहा. ये रूल 1 है इमेज फॉर्मेशन का. किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में. व्हाट इज द रूल 1 ऑफ इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर. अ रे ऑफ लाइट parallel to principal axis in convex mirror after reflection diverges and they appears to coming from focus behind the mirror. Yes or not? वो सभी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद वो डाइवर्ज होगा और वो प्रतीत होगा वो फोकस से आ रहा है ना. देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है, फिर से ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. फोकस पीछे ही लाई करेगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं थर्ड लेक्चर में. ध्यान से देखो, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल है, ये दूर जाएगा किस तरह, इधर इधर किस तरह, ये प्रतीत होगा ये कहाँ से आ रहा, फोकस से. ये रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये भी दूर जाएगा किस तरह, ये प्रतीत हो रहा है ये फोकस से आ रहा है. यही रूल 1 इमेज फॉर्मेशन का किसमें, convex mirror में. What is the rule 1 of image formation in convex mirror? A ray of light parallel to principal axis in convex mirror after reflection diverges and appears to come from focus. Now come to rule 2 of image formation in convex mirror. What is rule 2 of image formation in concave mirror? A ray of light passing through center of curvature return back on the same path. But in case of convex mirror, क्या कोई ray of light originally convex mirror के center of curvature से पार कर सकता? कभी भी नहीं. ऐसा इसलिए क्योंकि सेंटर कर्वेचर कॉन्केव मिरर के केस में सामने लाई करता, बस कॉन्वेक्स मिरर केस में सेंटर कर्वेचर पीछे की ओर लाई करता. कोई भी रे ऑफ लाइट ओरिजिनली कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर कर्वेचर से पार नहीं कर सकता. तो रूल किस तरह चेंज हो रहा है इस बात को आप ध्यान से देखो. माना ये रे ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट से एक रे ऑफ लाइट आ रहा, वो मिरर पे इंसिडेंट कर रहा और वो प्रतीत हो रहा वो सेंटर कर्वेचर की ओर जा रहा. और रे ऑफ लाइट इंसिडेंटिंग ऑन कॉन्वेक्स मिरर appears to coming towards center of curvature of a convex mirror will return back on the same path. ध्यान से सुनो, अगर कोई रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स मिरर की सेंटर कर्वेचर की ओर जाता वर्चुअली प्रतीत हो रहा, रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस उसी पाथ से क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा. ये रूल 2 समझ में आया. अगर रे ऑफ लाइट सेंटर कर्वेचर की ओर जाता प्रतीत हो रहा तो रिफ्लेक्शन क्या, वो वापस उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा. जैसे ये रे ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट रे था, इसमें इंसिडेंट किया लेकिन प्रतीत हो रहा है ये सेंटर कर्वेचर की ओर जा रहा है, वापस इसी पाथ पे क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा.
रूल 2 समझ में आया? वो रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स मिरर केस में कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट करा और प्रतीत हो रहा उसके सेंटर कर्वेचर की ओर जा रहा, तो वापस उसी पाथ पे क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। हाउ कुड यू डिफाइन रूल 2 ऑफ इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर? ऑल दोज रे ऑफ लाइट, a ray of light appears to coming towards center curvature for convex mirror, return back on the same path. Now come to rule 3 of image formation in convex mirror. Rule 3. Again, this is a convex mirror is taken. This is pole, this is focus, this is center curvature. Now listen. Rule number 3 is again the converse of rule 1. What was rule 1? A ray of light parallel to principal axis after reflection diverges and they appears to coming from focus of a convex mirror. At the same time, a ray of light appears to coming toward focus will become parallel to principal axis. Observe. Suppose this to be an incident ray. This incident ray appears to coming toward focus. ये ray of light प्रतीत हो रहा फोकस की ओर जाता हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगा, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना? अगर कोई रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स में कैसे फोकस की ओर जाता प्रतीत हो रहा, वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये रूल 3 है। हाउ कुड यू डिफाइन रूल 3 ऑफ इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर? और रे ऑफ लाइट appears to coming toward focus of a convex mirror become after reflection become parallel to principal axis. And lastly, rule 4 of image formation in convex mirror. Observe, the rule is same here. A ray of light incidenting at pole of a convex mirror return back making same angle with the principal axis. Now this is pole, this is focus, this is center curvature. From source of light, a ray of light is incidenting at the pole. This line is representing principal axis. The incident is making any angle with principal axis. Let this be angle of incident. The reflected will return back making same angle with the principal axis, such that angle I is equal to. This is the last rule of image formation convex mirror. What we have conclude? अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट कर रहा तो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होगा, जितना एंगल इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से बना रहा उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल बनाता हुआ रिटर्न हो जाएगा। ये 4 रूल था इमेज फॉर्मेशन का। किसमें कॉन्वेक्स मिरर के केस में। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऑब्जर्व करो, फिर इसका यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन। ध्यान से देखो। रूल 1, what is the statement of rule 1 of image formation convex mirror? A ray of light parallel to principal axis after deflection appears to coming from focus. This is pole, this is focus, this is center curvature. Listen, this ray of light is parallel to principal axis. After reflection, it will diverge and it will appear to coming from focus. At the same time, this ray of light is also parallel to principal axis. After reflection, it will diverge and it will appear to come from focus. Yes or not? A ray of light parallel to principal axis after reflection diverges and appears to coming from focus. वो वर्चुअली प्रतीत होगा फोकस से आ रहा। रूल 2 देखो। What was the statement of rule 2? A ray of light appears to coming towards center or curvature of a convex mirror return back on the same path. This is pole, this is focus, this is center curvature. Suppose this to be an incident ray. Now this incident ray appears to coming towards center curvature. This incident ray will return back on the same path. Yes or not? Let this be an incident ray. This incident ray appears to coming towards center curvature. This will return back on the same path. What is the rule 2 of image formation in convex mirror? A ray of light appears to coming towards center curvature for convex mirror return back on the same path. And this is rule 1. A ray of light parallel to principal axis in convex mirror after reflection appears to coming from focus. Now let us consider rule 3 of image formation in convex mirror. Again, this is a convex mirror. This is pole, this is focus, this is center curvature. Suppose this to be an incident ray. This incident ray coming toward focus of a convex mirror. This incident ray virtually appears to coming toward focus of a convex mirror. After reflection, it will become parallel to principal axis. This is rule 3 of image formation convex mirror. A ray of light appears to coming toward focus of a convex mirror. After reflection, become parallel to principal axis. Yes or not? And what is the rule 4 of image formation convex mirror? If a ray of light is incidenting at a pole of convex mirror, if a ray of light is incidenting at pole of a convex mirror, it will return back making same angle with the principal axis. Pole, focus, center curvature. ये रहा पोल पे फॉल कर रहा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है प्रिंसिपल एक्सिस से बन रहा, रिफ्लेक्टेड भी सेम एंगल बनाता हुआ रिटर्न हो जाएगा। 4 लॉ था इमेज फॉर्मेशन का। ठीक है, अब हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं कॉन्वेक्स में केस में। कॉन्केव मिरर के केस में फोकस, सेंटर कर्वेचर ये सभी पॉइंट मिरर के सामने लाई करता था। वहाँ पे टोटल हम कितने केस को स्टडी किए? 6 केस को। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो भी ओरिजिनल पॉइंट है फोकस, सेंटर कर्वेचर, ये सभी पॉइंट क्योंकि मिरर के पीछे लाई कर रहा है, क्या यहाँ पे पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट को हम
पोल और फोकस के बीच में रख सके, फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में रख सके, फोकस पे रख सके, सेंटर कर्वेचर पे रख सके, बियॉन्ड सेंटर कर्वेचर इन्फिनिटी पे रख सके। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सभी पॉइंट मिरर के बिहाइंड लाई कर रहा, क्योंकि ये पॉइंट मिरर के बिहाइंड लाई कर रहा, बिहाइंड मिरर के बिहाइंड में तो ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते, हमेशा मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो यहाँ पे एक ही केस हो सकता है, ये बहुत से दो केस हो सकता है। पहला केस क्या होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, let an object is placed in front of convex mirror, let A be the top position of object and B is the bottom position of object. Okay, now we will use rules of image formation for constructing the image of this object. Now listen, from source of light, a ray of light coming which is parallel to principal axis. Now since this ray of light is parallel to principal axis, what is the rule 1? Any ray of light parallel to principal axis after reflection diverge and they appears to coming from focus. तो ये इंसिडेंट रे है, ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्शन का ये दूर जाएगा, ये प्रतीत होगा, ये कहाँ से आ रहा? फोकस से। इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रे आर रिक्वायर्ड। यूज रूल 2 ऑफ इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर। नाउ consider from source of light, a ray of light incidenting at convex mirror like this. This ray is appears to going towards center curvature, it will return back on the same path. Yes or not? है ना? ए भी ऑब्जेक्ट है, ए से एक रे ऑफ लाइट आ रहा जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस जा रहा प्रतीत होता हुआ, और लास्टली ये रे ऑफ लाइट सेंटर कर्वेचर की ओर जाता प्रतीत हो, और ऐसी पाथ पे क्या हो रहा है? रिटर्न हो रहा। क्या ये दोनों रिफ्लेक्टर का एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा? नहीं, ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड डाइवर्जिंग, इसका एक्चुअल इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं रहा। ये वर्चुअल इस पॉइंट पे मीट करता प्रतीत हो रहा। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा? बिहाइंड द मिरर। ये ए डैश और ये बी डैश, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज। Now listen, what is the property of image? What is the position? The image is forming in front of the mirror or behind the mirror? The image is forming behind the mirror between pole and focus. Yes or not? Since the image is forming behind the mirror, the image will be real or virtual? It will be virtual, and a virtual image is always erect, है ना? ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ऑब्जेक्ट का भी टॉप पोजीशन है, इमेज का भी टॉप पोजीशन है, ये इमेज कौन सा होगा? इरेक्ट। और लास्टली, व्हाट अबाउट द साइज? द साइज ऑफ इमेज इज लेस देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सच एन इमेज इज डिमिनिश, है ना? कॉन्वेक्स मिरर की किसी भी पोजीशन में ऑब्जेक्ट अगर रहे, कोई भी पोजीशन में, तो हमेशा इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा, इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, हमेशा डिमिनिश बनेगा। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछता भी है। नेम द इमेज, ड्रॉ द इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ फॉर अ मिरर व्हिच ऑलवेज प्रोड्यूस ए वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द आंसर विल बी कॉन्वेक्स में यू हैव टू ड्रॉ दिस इमेज फॉर्मेशन। यस और नो? नाउ वी विल do the case number 2 of image formation convex mirror. Now the object will be placed at infinity. Now where the object will be? It will be at infinity. Listen. Now this is a convex mirror. This is principal axis. This is pole. This is focus. This is center curvature. Now consider this be infinity. A point very far apart from the mirror. At infinity, an object is taken, A be the top position, B be the bottom position of object. Now consider from source of light from A and B, these parallel beam of light are striking the mirror at two different points of incidence. Now since these rays of light are parallel to principal axis, after reflection they will diverge and they will appear to coming from focus. फिर से क्या दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट का ओरिजिनल इंटरसेक्शन हो रहा? नहीं, दोनों वर्चुअली किस पॉइंट पे मीट करता प्रतीत हो रहा? फोकस पे। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? फोकस पे। पॉइंट से इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? फोकस पे, है ना? तो अगर हम अब प्रॉपर्टी लिखे तो हम क्या लिखेंगे? इमेज इज फॉर्म एट फोकस बिहाइंड मिरर, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड लास्टली द इमेज इज हाईली डिमिनिश। अ पॉइंट सेफ इमेज इज ऑब्टेन्ड। है ना? ये प्रॉपर्टी था, ये बात समझ में आया ना? ए बी ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, ए टॉप पोजीशन, बी बॉटम पोजीशन है। ए और बी से ये पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा है, ये सभी डाइवर्ज करेगा, और ये डाइवर्ज कर रहा तो ओरिजिनल इंटरसेक्शन तो हो ही रहा है। इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा? वर्चुअल फोकस पे। पॉइंट से इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा? फोकस पे। ये इमेज फॉर्मेशन था कॉन्वेक्स मिरर के केस में। लास्टली अगर यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें
तो कॉन्वेक्स मिरर किसी भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन करता। तो रियर व्यू मिरर के तौर पे हम इसका यूज करते हैं। हेडलाइट मिरर के तौर पे हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं और रियर व्यू मिरर के तौर पे हम किसका यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का। व्हाई कॉन्वेक्स मिरर यूज है रियर व्यू मिरर इन व्हीकल? बिकॉज इट प्रोड्यूस ए वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। लास्टली, कोई कॉन्वेक्स मिरर हाईली डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता तो इसका फील्ड ऑफ व्यू वाइडर होता। क्योंकि इसका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है तो इसको सेक्रेटरी मिरर के तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं मॉल्स में या जहाँ, या फिर जहाँ पे बड़े से एरिया को एक छोटे से जगह से को कंट्रोल करना या जज करना, या तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ये दो यूज है कॉन्वेक्स मिरर का। इसके अलावा तुम और यूज नोट कर सकता, दो बेसिक सा यूज क्या होगा? व्हाट विद द यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर? कॉन्वेक्स में यूज है रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। Since convex mirror produces a wider field of view, thus it uses secretive mirror. Okay. Now, of course, in chapter number 4, except numerical portion, I mean sign convention, mirror formula, and concept of linear magnification and their application, almost all the topic have been completed so far. The sign convention, the mirror formula, and the linear magnification will be discussed in next video lecture. But you should anyhow try to solve all the questions of H-chan except part number 4 and part number 6. वो दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल, इसके अलावा सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करके जो प्रॉब्लम है तुम पूछो। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में।